So Hare Mahadev. In this video we are going to discuss 3 more questions of limits, obviously PYQs, and which came in mains, and second one also in mains, and third one in JEE Advanced. Very easy question, actually very easy question, not because I'm solving it inside the home, but seriously these are very easy questions and standard questions. Okay, so let's try to solve these questions. Just a second. The first question says, Acha, x tends to, okay, don't be confused, this is x tends to 0 minus, and in the denominator there is mod of x. Okay, so we need to find LHL only. So if we find LHL, then minus h into minus 1 plus h into sine of minus 1 again, then whole divided by h. If we cancel this h tends to 0, as there is no indeterminate form involved if we tend x to 0, and this minus will get compensated with this minus, and we have the result at last, which is sine of 1, which was there in the options. Okay, so this is the correct answer, sine 1. Just a second, minus of sine. Clear? Then the next question is this. So we already know that if we have the form of 1 minus cos f of x, let's suppose, and if limit x tends to a implies f of x tends to 0, then just a second, and then we have limit x tending to a 1 minus cos f of x is equal to f square x by 2. This will be the result. So this was the thing which was used in this question. Okay, so we just need to put the values and just note it down. Okay, so the value will be clearly p square of x divided by 2 whole under root, and here it will be x plus alpha minus 4. Okay, then what is alpha? Alpha is the positive root of the equation this. So clearly we can see that x plus 1 maybe, yeah, and x minus 2 will be the factor of p of x. Okay, then alpha is equal to 2. If we substitute alpha here, then what will be the result? We can cancel it and write it here as x minus 2. Okay, and here it is p square x. We can take it out and write it as mod of p of x 1 by root 2 divided by x minus 2. Okay, so what will be mod of x, mod of p of x? We are given x is tending to, just a second, x is tending to, clearly see this, 2 plus. If we imagine the graph, I guess if we are going to get the examination of JEE means, it is quite very easy to imagine. The one root is minus 1, another root is 2. So 2 plus में इसका क्या आएगा देखना ग्राफ, ये पॉजिटिव होगा, तो p of x वैसा का वैसा ही खुल जाएगा. तो p of x तो वैसा का वैसा ही खुल गया. तो आ क्या गया, x plus 1 into x minus 2 divided by root 2 into x minus 2. So cancel these terms, and x is tending to 2 plus, then the answer will be 3 by root 2, and 3 by root 2 is the correct answer here. Okay, so we can write it over here, which is 3 upon root 2 is the correct answer. So if these things are clear, then okay, we can solve this question by many methods, but this method is quite very easy if you are conceptually very strong. If you are not very strong conceptually, then we can solve this by 1 minus cos of p of x whole divided by x minus 2 ka whole square. Okay, now you can just take the limit x tending to 2 plus inside the root over, and you can get the answer. Okay, yeah. Then the next question here is of JEE Advanced. This is quite interesting question actually. If you know the standard limits, then this is very easy question. Okay, so we know if there is e involved in the question, then we should directly remember the theorem e to the power x minus 1 divided by x, or e to the power f of x minus 1, f be any function, and divided by f. This limit will be equal to 1 if limit x tends to some real number a, and just a second, will be 1 equal to 1 if limit x tending to a f of x tends to or equal to 0. So if you are able to understand this and remember the standard limit, then this question is very easy right now. Okay. Here there is e, we can take it outside by common. Okay, so it will be like e to the power cos of alpha to the power m, पावर में ही -1, यहाँ पे -1 whole divided by alpha to the power m is equal to minus e by 2. Cancel both the, and you will get the equation e to the power जो भी है यहाँ. ठीक है, अभी क्या करना है बेसिकली, which is equal to -1/2.
अच्छा, अभी जस्ट हमने देखा था कि ऊपर जो भी फंक्शन होगा इक्वल टू यहाँ पे भी होना चाहिए वही सेम, ठीक है। तो वही सेम मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1 ये करा दिया, और यहाँ पे ऊपर भी वही सेम फंक्शन मल्टीप्लाई करा दिया cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस 1. Okay, this will be directly equal to how much? This will be directly equal to 1. Okay, because at limit alpha tends to 0, this will tend to 0, and cos of 0 is equal to 1. 1 minus 1 is tending to 0. Okay, so this part is quite nicely done. Then the next part will be solving this. Cos of alpha to the power n minus 1 whole divided by alpha to the power m is equal to minus 1 by 2. We know that the actual standard form is 1 minus cos alpha to the power m, or else we can cancel the minus term both the side by adding here minus 1 and minus 1. This is the standard form actually. Okay, in the standard form we know that whatever the argument of cos will be, the denominator should contain, if the limit exists and is equal to half, then argument of this इसका बेसिकली स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर. ओके, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू टू टू पावर एन, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे कुछ बच्चों को समझाने के लिए, देन इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू अल्फा. इज इट क्लियर? एंड इफ वी टेक होल रूट, not root but 1 by n, because the required question asks here about m by n, so we are trying to force m by n both the side. So alpha to the power m by n is equal to alpha square, and okay, alpha square, then alpha, if we cancel both side, if we cancel alpha both side, then what are we fetching? M by n is equal to 2. So this was the answer of JEE Means 2000, JEE Advanced 15. Okay, the answer will be here, which will be equal to 2. अच्छा, फिर से समझा देता हूँ यहाँ पे जो स्टेप मैंने लिखा है. याद करो वो वाला फंक्शन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, मतलब इसका लिमिट एग्जिट करता था और हाफ की इक्वल कब आता था? जब इसका स्क्वायर लिखा जाता था नीचे, मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मतलब कॉस के आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर जब होता था, इजंट इट? तो बस मैंने वही अप्लाई किया यहाँ. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि मान लो हमने ये इक्वेशन लिख दिया सर कि अल्फा एन का स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फा टू द पावर, मान लिया हमने ये लिख दी, ठीक है. इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट होता है इस क्वेश्चन पे. ओके, इतना तक तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन इसके बाद हमने 1 बाय n कैसे ले लिया बोथ साइड, जो पावर में nth रूट कैसे ले लिया हमने, क्योंकि n पॉजिटिव नंबर है और फ्रैक्शनल भी. अगर ये नेगेटिव हो गया क्वांटिटी बेस में तो क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन दे आस्क एक्चुअली. अच्छा, तो मान लो कि अल्फा एक नेगेटिव नंबर, मतलब अल्फा इज टेंडिंग टू 0 ना, तो मान लो ये 0 माइनस h है, कोई छोटा नंबर नेगेटिव नंबर, अल्फा बी नेगेटिव. ओके, तो हमने अभी जस्ट क्या बोला डेफिनेशन में कि डिनोमिनेटर में जो होना चाहिए वो कॉस के आर्गुमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है. तो देखना अच्छे से, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो अल्फा टू द पावर m, और m को मान लो कोई एक ऑड नंबर है, ठीक है. तो अगर ये ऑड है m और ये अल्फा क्या है, सॉरी ऑड हो ही नहीं सकता ना m बेसिकली. क्यों ऑड नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये ऑड हो जाता है और अल्फा हमने क्या माना है, अल्फा इज लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा आंसर? नेगेटिव आ जाएगा अगर ऑड हो गया. तो m कभी भी ऑड नहीं हो सकता. इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं. ओके, देन यहाँ पे भी पॉजिटिव है ये और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और मान भी लिया कि नेगेटिव है, तो भी हम नेगेटिव का स्क्वायर रूट ले ही नहीं रहे ना बेसिकली, हम तो उसका जो पावर है उसको कंपेयर कर रहे हैं बस. इसीलिए nth रूट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, nth रूट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इक्वल टू आ जाता है कितना? अभी जस्ट हमने देखा था m बाई n इज इक्वल टू 2. या फिर अगर तुम्हें इतना ही डाउट होता है इस क्वेश्चन में, देन तुम इस वाला जो स्टेप है वहाँ पे क्या कर सकते हो बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस. इस स्टेप में तुम ये कर लेना, अल्फा टू द पावर m बोथ साइड डिवाइड कर लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस m, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, ठीक है. तो इक्वल टू कर दो इसको 0 के, तो 2n माइनस m इज इक्वल टू 0, विच शुड इम्प्लाई m बाई n इज इक्वल टू 2. बस, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. और अगर इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो यू कैन श्योरली कमेंट. ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, बट डोंट फॉरगेट टू कमेंट. एंड चेक कर लेना है, सर्च के लिए एक सीरीज़ बनाया था मैंने, बहुत अच्छा प्ले लिस्ट है वो, डेफिनेटली चेक दैट एज वेल. थैंक यू.